Delighted to welcome all our special agents who joined us from the different parts of the country and the world to comprise this thrilling faction. Our speakers' varied areas of expertise converge and they will deliver insightful and incisive comments on crime fiction and non-fiction that surrounds us. I'd like to thank Hindustan Times for supporting the festival as our title sponsors, Oxford Bookstore as our co-producers. Whatever I say is not going to suffice for the superlative team. I thank Preeti Paul for her energetic involvement, Atika, Nitin, and the rest of the team at Oxford Bookstore. A big thank you. I'd like to express my gratitude to Cox and Kings as our powering sponsors and their full throttle cooperation. A heartfelt thank you goes out to the other corporation, especially to Mr. Deepak Yadav. Investigation Discovery Channel for continuing their support to the festival. I'd like to thank Hotel Park for their generous hospitality. The British Council has always been a part of our endeavours. A special thank you goes out to Institut Français and Alliance Française. They've hosted Veronique, who is going to be doing the opening session today, and also for the film screenings that we hosted yesterday. I'd like to thank the Italian Embassy Cultural Center and also Institute Cervantes for their support. The Embassy of Israel for coming forward this year with a very interesting writer. Liel is here with us. I'd like to express my gratitude to the Embassy of Sweden. Good Zach, thank you for being here. Penguin Random House, thank you for being our print partner. I'd also like to thank Westland, Wani Prakashan, Pan Macmillan, and Quizcraft Global for helping us. No festival comes together without its directors working tirelessly. I'd like to thank Namita Gokhale and Kishore Desai for their spirited and inspiring vision for this second edition of the festival, and I'm sure they can promise us subsequent editions are going to be more thrilling. Alka Pandey, as our creative director, is always a pillar of support. We're missing her this morning. She'll be back in the evening from Calcutta. I'm eternally grateful to Preeti Paul and Ashwin Sanghi as our festival advisors. I'd like to call upon Preeti Paul to please come up and give the welcome address. A very good morning, dear friends, and a warm welcome on this very cold, chilly Delhi winter morning. On behalf of APJ Oxford Bookstores, it is a pleasure and an honor for us to be hosting the Hindustan Times Crime Writers Festival 2016 at this, our most architecturally crafted bookstore in the historic Connaught Place. Yesterday, we hosted Crime Time at our 96-year-old iconic Oxford Bookstore in Calcutta as part of the 7th edition of the APJ Kolkata Literary Festival, delighting huge audiences in Calcutta. This association is our way of encouraging and abiding engagement with reading and ideas through events in the genres of the visual and performing arts, art, film, theatre, music, literature, science, and now, in a big way, crime. With more than 30 bookstores in India, India's first dedicated children's bookstore, Oxford Junior, India's first of its kind tea boutique, the Char Bar, and the APJ Kolkata Literary Festival, India's only literary festival created by a bookstore, we believe that our bookstore opens the windows to a world of ideas and creativity. The ever-changing nature of crime fiction is perhaps one reason for its wide and enduring appeal. To use a cliché, crime fiction has the whole package. It has passion, plot, characters, suspense, mystery, motive, good and evil, and of course, top quality writing. And often, the promise of more to come in the next book, the very next page, or even the very next sentence. I have myself particularly been captivated recently
reading books about evil women characters who outfox evil man characters. Another trend is that with globalization, we in India are seeing localization of crime. And as with everything else, we now in India have our very own murders, our villains, our criminals, our types of crimes, our plots, and of course, crime stories. We bring you that and more over the course of the next 2 days. The Crime Writing Festival is a way of celebrating the growing importance of this genre and the huge amount of book sales that we have generated in Oxford Bookstore. I congratulate Meeta Kapoor and her team at Sihani for doing such a fabulous job in putting this together. I would like to thank Lady Kishore Desai for her vision and energy in initiating such an amazing festival, and to Namita Gokhale for her steadfast commitment to the world of literature, without which, frankly, this would never have happened. I hope that over cups of steaming tea, red hot killer chai, surrounded by the best of crime writing in the bookstore, you are truly thrilled as the plot unfolds over the next 48 hours. Thank you. Thank you, Preeti. I think you've set the right tone for the festival. I'd like to call upon our festival director, Namita Gokhale, to please come and say a few words. Dear friends, it's wonderful to see so many bright and alert faces on a cold Saturday morning. And it's so very exciting to be here today at the Crime Writers Festival 2016, where we have gained a lot of energy and critical mass since last year. I want to say, Indian writers do remember crime does pay. Crime and punishment was a very elusive theme at the Jaipur Literature Festival in 2014, which looked at justice, retribution, and the spaces in between. Somewhere around those days, Kishore and I talked about a Crime Writers Festival, a conversation which began on a cold and windy morning. I can see Kishore remembers that day in London over innumerable cups of coffee and biscuits. I mean, unimaginable how many biscuits we had and how much coffee we drank. I mean, it was a crime. It was a crime. And we were with two British crime writers and understanding how they ran their crime magazine and things, and we said we've got to do it. Our understanding of the theme picked up even more momentum over some cold and enlightening days in Oslo, where Kishore and I met some of the great writers of Scandinavian noir and their grim vision and their fascinating stories. And indeed, Scandinavian noir has become a literary marker around the world, and we understood. I mean, Kishore, of course, is herself a very, very accomplished writer of crime fiction. But for me also, it became a further occasion to understand and appreciate the genre. And as I said then, and at the cost of repeating myself, a wave of crime writing is better than a crime wave. And this does act as a pressure cooker in society. It gives vent, and we hope not too much inspiration, but rather just vents the things. As a genre, crime writing is unparalleled in its reach, in its impact, and its acute understanding and searching of society. Everything under the sun and the moon and under dark, moonless nights, the darkest aspects of human nature and society's own efforts to retrieve itself from this darkness. These are the purview of crime writing. I can see Piyush sitting here, I can see Jerry, I can see so many people whose books do evoke, the contradictions within ourselves as a human species. Because
It is about human nature and all its nobility, in its barbarity, and human societies with their duplicity, as well as their yearning for a trustful community. Every conundrum of law, every perversion of the human mind, and as well as the human instinct for truth-seeking and for truth-telling. This is the stuff of crime writing. The great French writer Albert Camus once said, I've only of course read this in translation, that crime fiction, detective fiction was the only thing that gave him hope, and I understood where that remark came from. And I also appreciate the value increasingly of genre writing, because so-called, and not being difficult, but so-called literary fiction in a changing market tends to be sometimes a bit narcissistic, a bit self-obsessed for people like us, whereas this is a really popular sort of literary engagement, whether it is in cinema or text. Crime writing is at last coming of age in India as society becomes more accountable. In my view, this is a sign of a mature and evolving society, one that can look at the outlaws in the context of accountability and responsible action, rather than in dramatic vendetta. When we didn't have a great amount of crime writing, we had vendetta, which was the staple of Hindi cinema and of beginning with Marie Curie. You know, the whole idea of vendetta is very different from crime fiction, because one holds counter the society and one holds irresponsible society, where the individual has to retrieve their honor. Many years ago, I wrote an article where I wondered if crime writing did not exist in India simply because there was no accountability. Because it sounded absurd to end a whodunit with a happy ending for the villain. I mean, he's sitting in Dubai watching a belly dance. And, it doesn't work. But as our society matures, these things change. So the next 2 days we'll explore the world of crime, the world of reduction, of rational analysis, of just retribution, and the workings of social order. This may bore you, but it's going to be very, very much more interesting than this. The whodunit is an extraordinary artifice that examines the very core of human nature. I welcome the varied and extremely talented group of writers who have honored us by being here for the Crime Writers Festival. More strength to their pens, to their keyboards, to their knives, and to their sharp intellects, their deductive reasoning, and attempts at a rational understanding of a mysterious and inexplicable universe that we live in. And just before I conclude, I'd like to say that my very dear friend Marie Brenner is in the audience, and she told me that she's going to write a long piece on India, where she's going to get her understanding and her sense of it from a festival like this, which opens up so many different things. So thank you, Preeti, thank you, Meeta, most of all, thank you, Kishore, my dear co-director, and just we all have a ball in the next few days. Bye-bye. I'd like to request Kishore Desai, our Festival Director, to come and give her opening remarks. Thank you, Nita. Thank you, Namita. Thank you, Preeti, and of course, all of you for being here. As we said, it's a very apt morning for a Crime Writers Festival to open. It's chilly, we are shivering here already. We're basically with the cold and droplets here, hopefully. But I think this is so apt. You walk in, you're already a jailbird, you're put behind bars, you encounter a body, and for me, I think, who grew up with Agatha Christie, the body in the library is a very important and significant moment, when you discover that death and books go together, And as we look around, I think in all these books, you will find multiple ways in which people have died, but a lot of them, surprisingly, are not called crime fiction, even though they might have died in mysterious ways. And that makes one wonder that why was this genre neglected for so long? Because you have it in the religious text, the Bible is full of crime, you have it in our epics, you have it in Ramayana, Mahabharata, they're like
crime upon crime, which is, inflicted on unsuspecting people by the gods, by human beings, whatever. So I think the crime genre is coming of age, not just here, but probably all over the world. It's more relevant for us in India because we, as Namita rightly put it, are just about beginning to deal with issues that we have neglected for far too long, issues of justice, issues of injustice. And these are the things of what is happening to us as a society, socially. Of course, the crime novels will always package all of this in what they call a page turner and things like that, edge of the seat excitement. But what we're really talking about a lot of the times is social change. And I do want you to bear that in mind because we have had some rather spectacular crimes which have taken place in Indian society, and I think we can reflect that this is not unique. This is probably happening all over the world. And something which we need to take away is how do authors, because we have an international set of authors with us here, how are they looking at all of this? How are they reflecting social change? And we have some really interesting takes on it. For example, our friend from Italy, Pier Giorgio, he works in a collective and they uncover massive scams. I would love to know how to do that in India, for example. Can a collective get together and can we also explore things which we have not done before? Because sometimes for an individual to work just by themselves and do a mammoth uncovering of some terrible things which are happening in society is difficult. So I think we will learn from each other's experiences and we will also be able to walk into that dark, very dark world where often people don't want to go because these are issues that we often do not want to address. Very quickly, I just want to say that why are we so worried about one particular fact as crime novelists in India? As I said, it's a genre that's just coming of age. We are worried of one particular fact that we are often at the bottom of the pyramid of writers. Why are we not taken more seriously? Because after all, as everybody has just said, there is a plot, there is a motive, there is a very tightly written story, and yet it is something which has not been considered to be serious literature. And I think all of us here this morning are proof of the fact that it is something which is beginning to be taken seriously, and I'm sure soon we will have our very own Crime Writers Association, as there are other parts of the world. There will be many more crime writing festivals. There are hundreds of them, for example, in France and in other places. We need to catch up in the UK. We need to catch up with that. And of course, we need to have a Crime Writers Prize, so that at last we can become equal, if you like, with the rest of the literary community. So there are lots of hopes and wishes as we go along, and this festival will also hopefully go from strength to strength, from crime to crime. And we are hoping that all of you will accompany us on this wonderful journey for the next 2 days. And as you sit even drinking your chai and death by chocolate, eating death by chocolate, dying of chocolate or whatever it is, if that can happen, you will be reflecting upon the myriad issues and the different styles of writing that we are going to be talking about, because it is within crime writing you have so many genres, and that is another area that we're going to explore, and hopefully all of you will have a great idea for a great book, and by the time you leave this festival. But thank you for being with us and continuing to support us, and we look forward to that support in the future as well. Thank you. I'm now going to leave you in the hands of Soumya Kulshresh, who is also a poet, writer, blogger, editor, translator, many hats. But as of now, she's going to take over as Master of Ceremonies, so you are in her capable hands for the rest of the day. Soumya. Thank you. Hello. I think I'm nervous, and it's only natural to be nervous in a place where words like crime, death, plot,
motives, manipulation are being thrown all around. And I'm one of those readers, who reads at night, and then when I'm reading psychological thrillers, I feel so scared that I call up friends and my standard dialogue will be, what if this happens to me someday? And what if this happens around me? How are you to deal with it? And I would literally have sleepless nights. I'm your ideal reader audience to all the crime writers. I get scared, so yeah, job well done. And I welcome you all to the Hindustan Times Crime Writers Festival, powered by Oxford Bookstore. Before I introduce the panel, a few packets of information and instructions. After every session, there will be book signing taking place right at the entrance of Chapa. So you can meet your favorite authors, interact with them, and I request the authors also to proceed to that area post your session so that your fans can have a word with you, can get their book signed. Second, please keep your phones on silent, as silent as they can be, so that an ominous ring does not send our panelists on some kind of fancy about some plot that could have been caused by some phone ring. And I would also like to tell you that since there is a very active social media audience that we are engaging with, the hashtags that we are using on Twitter are hashtags TWF2016, and you can tag the Oxford Bookstore Twitter handle as well as the Crime Writers Fest. The handle is @Crime Writers Fest, and talk about the festival as much as you want. That is all? Yes. And of course, post on social media, you have some interesting props here, get clicked as much as you want. I have done all these ceremonial clippings since the morning. And of course, we move into the first session of the day, which is titled Murder at the CN. We have Veronique Walde, a crime fiction author, a French crime fiction author here with us. And this session, she'll be in conversation with Kishore Desai, one of the festival directors. And we will learn about her inspirations, her plots, and demystify probably some of the depths of complexities which led her novel. We also have two of her works outside. I saw The Grace of Cricket that is kept right towards the right. And before I hand over the mic to them, one small piece of information is Cox and Kings has a counter right towards my right and your left. And they're running this contest where you just have to write a crime story and win a travel holiday. And you can all move, yes, just write a crime story and have a glorious holiday somewhere internationally. Yes, that's what they told me. And for the rest, you can procure this brochure from them, which has all information. Over to you, Kishore ma'am and Veronique. Thank you so much. So we're going to start the morning with a wonderful author from France, whose books I have enjoyed reading, two of them only, unfortunately, which are available to me in translation, but she has written many more. Veronique writes in the noir genre. So it's not exactly what we would call crime fiction in strict terms, but it has extremely dark characters, a lot of mystery, a lot of questions about who people really are. And I think this is becoming an issue which is also very relevant to India as society urbanizes much more, and relationships are often short-term. People connect, they disappear from each other's lives, they reappear. You actually have no idea who they really are, and their identities can often be completely different to who you thought they were. And this is what I took away largely from her writing. And of course, as we go through this, we'll be able to understand better what Veronique has been doing. But my first question to her really is going to be about the fact that she wears two hats. She's also a publisher. So my first question is going to be whether she became a writer first or a publisher first. I'm a writer first because I was a writer before I am a publisher. I published my books. I published books since I think 18 years. But she's about only 20, so this is a mystery to me. But I am a publisher since 5 years. I worked in a publishing house since 20 years, but as
production manager. You know, I worked with printers for children books, and Bolivre in French, books with a lot of photos, art books. And after I was publisher for big publishing house Albin Michel, with a lot of bestseller writers, crime bestseller writers, thriller writers, and French. And my job is to support them, help them in the process of writing. And so at the same time, I was writer, and I'm writing, and I'm talking about my books. What kind of books did you start out with? What kind of books were you writing earlier, when you were 90 years old or 18 years old? My first book was like legend, a code, a tale for adults, in an imaginary land, with a lot of women in a small town, and one of these women killed a man and hated this man. Oh my God, that's something for a first book. Oh, that. Was it based on anything you had read, or was this something you made up? Was it something real or something? It's a legend. No, which is it's a legend. it's something which she made up, and so there was a murder. Yes. Yes. In the beginning, there was a murder. So how would you describe your books? I mean, they are noir, right from the beginning, the kind of books you write. Yes. So they're very dark, right from the beginning. There was no happy moment in the book. Yes, happy moment and humoristic moments, because it's very important for me as humor in books. So I wrote a lot of dramas, but it was a lot of where l'humour, c'est dans les textes noirs, en fait. Dark humor in my text. In the last book, the next book we published in September in France. It's a mystery, because a girl who would like to investigate about a mysterious painter, and she discovered he has disappeared, and he was killed. So, yes, I have a lot of murders in my books, but I am not crime novelist. You don't describe yourself as that. But as a publisher, you do deal a lot with crime novels. From your publishing side, you are encouraging other people to write crime novels. Yeah. The big thing about your novels, because I read two of hers, which is one is called My See-Through Heart, and the other one is about called The Grace of Riddles. Now, I wanted to ask you about the fact that both of these are very urban stories about, as we said, identities that people don't really know much about.
How would you describe these books? Are they based on any reality, anything that is taking place, or are they all made up, or are they based on real characters? For me, writing is inventiveness is very important. Okay? Fiction is very important, and I need escape from reality. Okay, but in a story, you need characters, real characters. You need véracité, tu vois, Something believable. yes, believable. The readers need believe your story, but I need the inventiveness. Okay, and in the French art. Okay. In this book, I wrote the first sentence. The wife of Lancelot is dead this night, and when I wrote this sentence, I didn't know where I came, and so I thought Lancelot was his name, and the next paragraph I wrote his wife called him Paul. It's more simple, Paul, and I liked write blindly in my books, like an investigation. And in this book, this man investigate because his wife is dead, and she wasn't who he knew. So basically, why don't you come and join us? You can sit here. Yeah. Why don't you join us in front? So basically, what you're saying is that when you're writing, a lot of the times the crime writers write, they already have a plot in mind, and they take it from there. They know what their characters are going to do. They know where their characters are going to go. They know what to. What I'm gathering from you is that you write as though you're investigating the story yourself. You start with the first sentence, and you go along with that, and you build up the story as you go along. So you yourself are not very clear about where the plot. Because I need every day. It's every day, every morning, every night when I'm writing. I need to be surprised. To be surprised by my book, by my text, and because a book, you write 1,000 hours for writing a book. Okay, and if it's boring. And you mean to say if it's boring for you, the readers are going to read it. For readers, Yeah. so it's necessary to be surprised by Your own text. own taste. Okay, so you spend a bit of time writing every day. You write every day. That is necessary. Every day, every night. Every night, Yes. yeah. Because Veronique is also mother of 3 children, so you find the time to write. That is also. You don't sleep. That is the only thing. What I found very interesting about your book on the grace of brigands is that even though it is a latest book, even though it is not considered, as I said, strictly a crime novel, it deals a lot with very dark characters. And what I found was one of the things is about errors of judgment. I'll just read out
a little bit, one paragraph about errors of judgment which you've written, and I thought, how much of our lives actually depend or are sort of taken off track when we make those very crucial errors of judgment. So she writes, errors of judgment partake a great subterranean organization that spreads its roots and rootlets under your feet patiently and quietly, awaiting their moment, digging their many and fertile paths, enduring rotten things, until the instant they emerge from the soil, exploding in broad daylight, tightening around your ankles to block out the light and suck you into their darkness. So it's beautifully written, but what she is indicating to us that often in noir and dark novels, it's that one thing that you take a path you should not have taken, or there is an accident that occurs because you do something you may not have wanted to do, you fall in love maybe with the wrong person, or anything. An error of judgment can also lead you down a path which is like a downward spiral, which is what I found in The Grace of Brigands, that one error of judgment where one sister takes another one to see this nest of snakes. Yes. And then something terrible happens and it impacts the rest of her life. So do you find that when you are writing, as you said, you're writing in this way where you are surprising yourself? I'm surprising myself because I would like, with Grace of Brigands, I would like writing about books, about my relationship with books, because I come from a modest background and there is not any books at home, and I read. I came every week in public library, and I think literature saved us. I think literature saved me, and I escaped from toxic family, from my background with books, and I would like to writing a book is in The Grace of Brigands, but the story escaped from me, and when I organized my book, I need a beginning with an accident, with an important fact, which determination. Yes, that leads to that leads to the rest of the story. You just to understand what you're saying is that this book is autobiographical, has touches. Yes, a lot of. It's important for me to writing about imagine, But also your own life. Yes, but I am in this book. Yes, Yeah. I am in this book, but the character of Maria Christina is she's Canadian. She was born in 60s, and she was in California in 70s, and not me. But an interesting thing you mentioned is about the toxic nature of your own life. Could you elaborate a little bit on that? What was your life before you became a writer, or before you discovered literature? I had a family very strict family, and the books are prohibited at home. You cannot read. You're not allowed to read. Yes, but my sister becomes librarian, and I am a writer. So my father
a bien réussi, comment on dit? They succeeded. He succeeded. He succeeded, my father. So I think we must prohibit reading for our children. They never read. Because prohibition is transgression is very important. I think, and I was a child with cumbersome imagination. Cumbersome. It's a cumbersome imagination. Yeah. And I need to escape from this life, and books are perfect for this. Right. And it's why I worked very young for go out. And I wrote, and I published. And it's a good life now. We also get the feeling, and we have discussed this, about the issue of gender. That there is a difficulty in getting recognition as a woman writer in France. Is that correct? Yes, it's a problem in France, I think. It's amazing when I was publisher in a big publishing house, because in a committee every week, if the writer was a woman, the chief asked, "Is she beautiful?" And the writer is man, the question is not. So this is a problem, and last week we have a little scandal in the literary Yeah. yes. Because we have a big international fair of comics fair of Angoulême, and there is 13 writers, a nomination of 13 writers for the big prize, and zero woman, no woman in this selection and in this list, and so a lot of writers, male writers, comment ils se sont retirés, ils sont Out. We left. they left the list. So it was there was a reaction as a protest. As a protest, because it's really liberal. So why do you think that women are being discriminated against as far as writing is concerned in France? I don't know. It's very pernicious, because when you are a woman writer, you must talk about feminine writing, okay? But if you are a male writer, you don't talk about masculine writing. It's not a problem, and I don't know why it's like that. Anyway, in France, we have autant d'écrivains français que d'écrivains, autant d'écrivains femmes que d'écrivains. As many women writers as male writers. Yes, and this is very surprising. The status of women writers. I don't explain that, and in the publishing house, the majority of workers are women, Yeah. but no, not the chief. Okay, the chief is always a man. Let's see. Well, I think there are
slightly luckier in India because we do have a lot of women heading publishing houses and they're being run. Sorry. Never reflects on the lists. 75% of all our lists are made. No, they might be the list, but what she's saying is that even the chief sometimes. So we do have publishing houses where the so we need to have more encouragement as far as women are concerned, and that is a universal thing. But you have got a lot of success. So in your work, how come? I mean, what was it that made you stand out? Made you stand out? I mean, yes, because she's beautiful? No. I'm very volontaire, comment dire, determinate. And I talk about this problem in France, and a lot of women n'osent pas en parler. They don't dare. They don't dare talking about this. This is like a taboo, and it's a word et un gros mot, une grossièreté d'être féministe en France. Feminist is like an insult. Yes, yes. All right. So that word, and we should stay at home and cook and look after the children and not step out. It's also funny because France, you have in your mind it's a modern land and modern country, but I think it's Latin, un pays latin, Latin country, Very patriarchal. yes. Oh, okay. I'm not sure how much time we have. Can we open it up to questions? Yeah, okay. So can we ask for some questions from the audience? Is there anybody who would like to ask Veronique anything about the books or anything about what she's spoken about? No? Okay, Jerry. Sorry, I bought your book, but I haven't read it yet. But just from the passage that I heard, there seemed to be a philosophical tone to the writing as well, where you make statements about all of the mistakes that we make. Errors of judgments. Errors of judgments being a kind of network, subterranean network. Is this allowed in crime writing, or would your editor say to you, you're writing a book like this, you shouldn't have these passages in there? Because she does more noir, actually. Even right? noir. Okay. Noir also this idea of the philosophic statement, or the philosophic undertone. My editor, it's not a problem for my editor. I can write what I want, philosophical, humoristic passages, paragraph. It's not a problem for her. She's a woman. And she's a very successful writer. So I suppose people look forward to that kind of thing. Yeah, I want to ask a question. Yeah. Yesterday, when we were speaking, Nicola, he was telling me about your books, and he said that most of your books, the endings are very inconclusive. They're left open. So I have not read your books, but I'd like to ask you, how come you leave your endings very open? Is it a French thing, or is it like something specific that you think? Oh, my books are not very open. I think I understand what you want to say, because in France the books are we don't love fiction in France, and the books of the writer are we have invented the autofiction.
and it's terrible for fiction. It's terrible for inventiveness. And me, it's not my stuff. It's not my stuff, the auto fiction. And so I consider a book like an investigation. So I have an unveiling at the end of the books, of my books. So it's open. It was too much. It's not too much. Could you just explain autofiction? Biographical? Is it biographical? What she does? No, No. it means a very button fiction, you know, when you look at yourself. Yes. It's not autobiographic, it's when you are dealing with yourself, your feelings. So it's like very self-indulgent. Yes, and Your it's called sexual very, life, sexual very life. button fiction. When you Uh-huh. look at And your nego, almost I'm gazing upon your nego. Very much like Indian literary fiction, right? Now we should not run down literary fiction. I think our purpose is to investigate, as she says, what makes a good noir novel, how do we write it, what are the features that go into it, but not necessarily say that all literary fiction is bad, because people can be self-indulgent. But I think that leads to another question for us. And is crime fiction extremely popular in France? Yes. Noir fiction. Yes, this is very popular because I think the medias and the medias don't like fiction, but readers like fiction. We have a big desire of stories. Yes, you understand. Readers loves. Yeah. Loves So they enjoy, and I think you have some of the biggest crime writers festivals in France, in Lyon and other places. Yes. It's actually celebrated A as lot a of success for Yeah. these festivals. yeah. So it's not really frowned down upon. Could you tell us what you're going to be writing next? Is there anything? The next book? Yes. Is that also going to be dark and noir and Dark and historical and with a lot of murders, a lot of family secrets. As my next book. Are there a lot of good French women crime writers? Is there anybody you admire in particular in France? A French, A crime writer, a woman? a woman. Yeah. You want the name of the woman? Fred Vargas. Fred Vargas is the most successful woman writer of crime novels. I don't know if she's translated in English. Commissioner Margaret Degree. Degree is a male, is male and he's ancient. Yeah, that's an older. Any further questions from anyone out there? Which is, because I think what is going to be interesting about her books is the fact that we can all relate to it, as we said right in the beginning. You know, this is something which is, since it's about urban life, and it's about short-term relationships which affect each other. I don't understand. Can you finish your question? Yeah. So my point is that is this something that she feels is the dark side of urban living? Is that relationships are no longer, they don't have any permanence anymore, and that leads to a lot of difficulties and murders. Yes, I thought. I think French people are not are very individual people, and
French people are not, French people doesn't like collectivism. So la collectivité. Collectivity. And I think it's why they are very sad, they are very depressed. So France is beautiful, France is cool. But French people are very depressed. It's the most depressed people of the world. I think the Scandinavian countries would vie for that honor because they are probably even more depressed. And perhaps dark novels therefore work very well here. But this is a similarity which I think India is going through as well, because the communities here are also breaking apart and they are also becoming more individualistic and perhaps therefore more depressed and perhaps therefore more into writing more and more dark novels. So I think with that we'll wind up the session, but Veronique is going to be available for you to be asking her to sign her books and ask her anything else that you might want to know. Thank you so much, Veronique. Thank you. Thanks to both of you. That was a lovely session where much was gained in translation. And of course, so from Noah, from the dark side of urban living, we will be moving to another very interesting session called Dial M for Mafia. And in that, the fabled underworld of Mumbai will be investigated by Vivek Agrawal, who will be in conversation with Aditi Maheshwari. I would request the panelists to please. Which one? So while the panelists come, of course, let me just remind you that book signings are taking place right in front of Shahbar. If you missed out on the fabulous Cox and Kings contest, you will get all the details at the desk, which is towards my right. Write a crime story and win an international holiday. That's simple and that difficult. We're also trying to be on schedule all the time, so I request the speakers as well as the audience to be in place and not all the good people to not follow the favorite reputation of Indian police of never being on time with the crime scene. Because we're very honestly calling the crime scene here. Since I have some more time to talk, please tweet away, post away. The hashtag is #CWF2016. Twitterati is very active. Alright. And of course, I've been asked to remind that @ Oxford Bookstore and @ Crime Writers Fest is what you can use while tweeting to us. We have Mr. Vivek Agrawal and Aditi Maheshwari here. I've introduced your session well. And Vivek sir, of course, he's a journalist who comes with many years of experience, especially in the field of crime, legal defense. And he's been working with a lot of publishing as well as electronic media channels. And he's been spending some time in the past writing fiction on the many real-life experiences that he had while cracking cases as a media person. Aditi ma'am, of course, she is the director of Money Production, and she has many other laurels and designations to her name. She's an advisor to the Jaipur Bookmark and whatnot, but she wanted me to introduce her to you as a wannabe reader. She says, being an editor, the joy goes out of reading, so she's a wannabe reader and a current editor. I give it over to you both. Thank you so much. Is this working? Good morning. So, just to quickly begin our session, I would like to introduce my author and co-panelist today, Mr. Vivek Agrawal. Vivek began his career in independent crime writing in 1985, and he wrote for many national and state-level newspapers and drew cartoons. He joined Hamara Mahanagar in 1992
and Indian Express Group's Jansatta in 1993 as a crime reporter. After his scintillating decade-year-old career in print journalism, he began TV journalism with Janmat, the news and news channel that later became Live India. He served as news head for Me Marathi and joined India's premier news channel, India TV, as investigative reporter. He joined News Express as Maharashtra and Goa's head. In 2013, he took a sabbatical, thankfully, to fulfill his dream of writing, to explore the dark space of underworld terrorism and scams. He has published about 20,000 stories till date on crime in India and South Asian subcontinent. His new book or books, Mumbai and Mumbai Returns, opens in February 2016. These are the books that talk about the genesis and propagation and thriving underworld in India and South Asia. To quickly come to Vivek, who is very busy right now. Are we sorted? So, to begin the discussion, Vivek, were we looking for an AD right now? So we'll have a little AD for you all, just to warm you up on this cold winter morning in Delhi about crime, suspense, bloodshed. Not this. Audio, sir, audio. There's one. Yeah, this one. Audio. मुंबई की सबसे खतरनाक दुनिया के अंदर मुंबई के सबसे खराब पेशेवर हथियार हसीनाओं के मुंह आप भी धस जाएंगे वक्त के इस दलदल में जब हाथों में होंगी विवेक अग्रवाल की किताब मुंबई और मुंबई मुंबई में आकाश का दाग दाग Thank you so much for this. तो विवेक जी कहाँ से शुरू हुई ये कहानी मुंबई की? मैं 92 में जब मुंबई पहुंचा तो उससे पहले तक मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे शहरों में उज्जैन, इंदौर, खरगोन और तमाम बहुत ही छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो जज थे और क्योंकि ईमानदार होने की और सिद्धांतवादी होने की सजा ये मिलती है कि हर चीज के छठे आठवें महीने में ट्रांसफर होते रहते हैं और हम भी उनके साथ ट्रांसफर्स में जाया करते थे। तो हर जगह पे देखते समझते ये पूरी दुनिया हमने देखी समझी, लेकिन वहाँ की जो रिपोर्टिंग होती थी वो बहुत सीमित होती थी, बहुत छोटी होती थी। जब मैं मुंबई आने के लिए मुझे हमारा महानगर के संपादक अनुराग चतुर्वेदी ने कहा और मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो पूरी की पूरी एक अलग ही दुनिया है। यहाँ का जो क्राइम का संसार है ये अपने आप में एक विशाल सागर की तरह है और इसमें जितने गहरे आप डुबकी लगाएंगे उतने काले मोती पाएंगे। काला मोती सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो हमारी दुनिया में, क्राइम की दुनिया में काला मोती वही हो सकता है जो कि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवई,
अली पुदेश, इस तरह के अंडरवर्ल्ड डॉन्स और उनके शूटर्स, उनके जो सहयोगी हैं, उनके सिपहसालार हैं, उनकी कहानियां एक से एक हमारे हाथ में है। ये सब वहां पर जब करना शुरू किया तो उस दुनिया में अंदर पहुंचने के लिए सबसे पहले एक जद्दोजहद करनी पड़ी। क्राइम रिपोर्टिंग दो तरह की हमारे यहाँ पर है, एक वो है जो कि अंडरवर्ल्ड से मुखबिरों के जरिए खबर एक्सट्रैक्ट करना, तो उनके अंदर आपको बैठना और घुसना पड़ता है। दूसरी एक बड़ी सामान्य सी है कि भाई आप चार पुलिस वालों से मिले, चार इंटेलिजेंस के लोगों से मिले, उनके प्रश्नों को उठाएं, आपने खबर ली थी, आप क्राइम रिपोर्टर हो गए। मैंने पहला रास्ता चुना। मुंबई का जो सबसे बड़ा ब्रॉथल एरिया है तमाटीपुरा, रेड लाइट एरिया, वहां कम से कम एक वक्त में 8 लाख जो व्यवसाय हैं या कवायद हैं वो रहती हैं। उनके बीच में सबसे पहले पैठ बनानी शुरू की ताकि लोगों की जो असली खबरें हैं वो वहां से मुझे मिल सके। अंडरवर्ल्ड की सबसे बेहतरीन बढ़िया खबरों का सबसे अच्छा सोर्स मुंबई के ब्रॉथल्स और मुंबई के बार हैं, जो गर्ल्स डांस बार होते हैं। इन लड़कियों के साथ में जब रिश्ते बनने शुरू हुए तो उन्होंने ये वो चीजें बतानी शुरू की जो हम लोग सोच नहीं सकते थे कि उन तक की इंफॉर्मेशन होगी। मुखबिरों से मिलना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये स्थिति बनने लग गई कि सीधे जो अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं, शूटर्स हैं, उन लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तिहाड़ जेल से लेकर के आर्थर जेल तक न जाने कितनी जेल्स हैं जिनमें लोग जिनसे भागना चाहते हैं, छूट कर निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी की जानकारी के बिना, जिसे आप जेल ब्रेक कहते हैं। पर मैं रिवर्स जेल ब्रेक किया करता था, मैं अथॉरिटीज की जानकारी के बिना जेल के अंदर जाता था, उन अंडरवर्ल्ड डॉन्स से, शूटर्स से मुलाकात करता था, उनकी इंटरनल स्टोरीज निकाल करके लाता था और छापता था। सवाल ये उठता था कि क्या आप खतरे में हैं? निश्चित तौर पे एक क्राइम रिपोर्टर जो है वो बहुत ही एक थिन लाइन पर काम करता है, जहां खतरा उसके लिए पल पल होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कभी कोई रिस्क नहीं है जो अपने पेशे के प्रति बहुत ईमानदार है, स्वयं के प्रति बहुत ईमानदार है। आपने जैसे ही किसी अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति विशेष के बारे में या उससे पैसे लेकर के खबरें छापनी शुरू की या खबरें छुपानी शुरू की, आप उनके विरोधियों के टारगेट पे आ जाते हैं। ऐसा कई दफा हुआ है, 2-4 बार इस तरह की गलतियां भी हुई हैं। खबर किसी और ने छापी थी, उसमें उनका नाम नहीं छापा, जिसकी वजह से इस देश के बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन ने मेरी हत्या करने की सुपारी एक लड़के को दी। ये बहुत अच्छा एक मौका बन गया ऐसा कि जिससे मुझे बहुत चीजें देखने, समझने, सुनने का अवसर मिला। उस लड़के पर या उस लड़के के साथ में चूंकि वो रिश्ता था, वो शूटर था उस ग्रुप का, उस गैंग का, उसने मुझे बताया कि आपको थोपने की, मैंने वहां गिराने की सुपारी आई है। फिर जिस बंदे ने सुपारी दी थी, मैंने उससे बात की, उसने बोला आपने ये न्यूज लिखी है इसलिए। अरे न्यूज मेरी नहीं है। और उन्होंने कहा कि उसमें तो फलाना संवाददाता लिखा है, नाम नहीं है, और आप ही क्राइम करते हो तो ये आप ही की है, बड़े भाई ने बोला है आपको बता दो। ठीक है। जब कॉपी चेक की, हैंडरिटन टेस्ट चेक किए, तो उसमें सिर्फ आगे की 10-12 लाइनें जो है वो किसी और व्यक्ति की लिखी हुई थी, बाकी पूरा बैकग्राउंडर एक पेज पूरा भर के मेरा तैयार किया हुआ था। मैंने वो सब चीजें निकलवाई, बाद में पता किया तो अदर एडिशंस में उनका जनाब का नाम लिखा था, वो बताया। तो वो बड़े भाई उससे नाराज हो गए कि अच्छा उसकी ये गलती है तो ठीक है, उसे ठोको, विवेक भाई को सॉरी बोलो। मैंने कहा अगर आपने ये बेवकूफी की होती और मुझे पता नहीं चलता तो अब तक तो मेरी लाश फिर चुकी होती। ये खतरे होते हैं। अब हमारे यहाँ पर जैसे बहुत बड़ी समस्या है कि लोग मानते हैं कि क्राइम रिपोर्टर न्याय खुदा होता है, ऐसा नहीं है। क्राइम रिपोर्टर आपके जैसा ही एक छोटा सा व्यक्ति है जिसके पास में कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, उसके पास में सिर्फ उसकी विल पावर उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। Sir, in your very scintillating career, what was the most memorable incident, where you really thought कि अब मुझे चुनना क्या है, जहाँ पर आपके लिए चॉइस बहुत मुश्किल हो गई करना कि मैं इस स्टोरी को दबाऊं या इस स्टोरी को जाने, क्योंकि आपने इतने न्यूज़पेपर्स, इतने विचल 20,000 से ज्यादा स्टोरीज आपकी आज तक पब्लिश्ड हैं,
तो कहीं ना कहीं तो ये मौका आया होगा कि लेट्स क्विट क्राइम रिपोर्टिंग और बिकॉज दिस इज वेरी वेरी एंड स्पेशली इन इंडिया जहाँ पर विटनेस हो चाहे मुखबिर हो मुखबिर बाय द वे आर द इन्फॉर्मर्स if you don't know उन लोगों की प्रोटेक्शन के नाम पर तो एक बहुत बड़ा मजाक है हमारा इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर तो फिर आपको how did you manage all these pressures? सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे जैसे जो क्राइम रिपोर्टर्स हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो लोग ऑर्गेनाइजेशन से खुद काम नहीं करते। हम अपनी शख्सियत अपने बलबूते पर काम करने वाले लोग हैं क्योंकि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कमी यहाँ के प्रिंट न्यूज इंडस्ट्री में या ब्रॉडकास्ट न्यूज इंडस्ट्री में ये है कि क्राइम रिपोर्टर्स या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को उनकी इन्वेस्टिगेशन या क्राइम में जो एनॉर्मस अमाउंट खर्च होता है पैसा खर्च होता है वो नहीं दिया जाता। तो वो पैसा कहाँ से आता है? या तो आप करप्शन करके लाएंगे या तकनीक से लाएंगे। मैंने उसके लिए एक दूसरा रास्ता चुना क्योंकि मेरी जो मोहब्बत है वो फोटोग्राफी है। मैं फोटोग्राफी करना बहुत पसंद करता हूँ और जब मेरी शरीक हयात यानी मुझसे मेरी पत्नी मिली थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप वाकई मामांगी रहेंगी। मैंने बाईं तरफ वो जैसे कहा जाता है कि स्त्री बाईं तरफ होती है मामांगी कहते हैं उसे, आप मामांगी ही रहेंगी। उसका कारण ये है कि दाहिनी तरफ तो हमेशा कैमरा रखा होगा। तो मैंने उस कैमरे को अपना बिजनेस मॉडल बनाया। उससे मैं पोर्टफोलियोज करता था, मैं फैशन फोटोग्राफी करता था और उनसे मैं पैसे कमाता था। मुझे एक फोटो सेशन करने के 2 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए मिलते थे जो कि मैं इन सब कामों में खर्च करता था क्योंकि न्यूज़पेपर से उतना पैसा नहीं मिला करता था जितना मुझे चाहिए। तो ये एक हमारा तरीका था। जहाँ आपने एक जो बात पूछी कि ऐसा कोई वक्त आया जब मैंने ये सोचा कि मैं छोड़ दूं क्राइम रिपोर्टिंग, माफ कीजिए चिता पे जाने के बाद ही छूटे। संभव ही नहीं है कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग छोड़ दूं क्योंकि सच तो ये है कि हमने से हर आदमी जो आप और मैं बैठे हैं कई नकाब चढ़ाए बैठे हैं और इतना झूठ बोलते हैं समाज में, इस तरह की बातें बोलते हैं लेकिन सच्चाई उनके पीछे कुछ और होती है। अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां वो जो बोलते हैं वो होता है। मैंने कभी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी नहीं चाहिए, मैंने कभी और किसी रिपोर्टिंग में जाना नहीं चाहा। उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि हमारे पास में ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, पॉलिटिक्स में हो या फिल्म इंडस्ट्री में हो या अदर फील्ड में। यहाँ अंडरवर्ल्ड में सीधे हम लोग की एक बात होती है, भाई ये काम करने का, बजाने का, ठोकने का, सुपारी लेने का, यानी करने का, उसके अलावा कुछ दूसरी बात नहीं। अगर उन्होंने एक सुपारी ले ली तो एक्सक्यूट करेंगे, आप उसको उसके सामने 100 टाइम ज्यादा पैसा ऑफर कीजिए, आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो ये अंडरवर्ल्ड वो जगह है जहां पे सच्चाई को बल मिलता है, जहां पर वो लोग ये बात नहीं कहते कि हम बाद में अपनी बात से मुकर जाएंगे या पलट जाएंगे। एक बार डील हो गई, घाटा होगा तो हम डील पूरी करेंगे। पर क्या ऐसी धारणा रखने में और इस बात को भी अपने किताबों में उजागर करने की वजह से आपके कभी ये इल्जाम नहीं लगा कि आप अंडरवर्ल्ड को बहुत ग्लैमराइज कर रहे हैं? जिस दिन से मुंबई में हूँ या जिस दिन से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सदा ये झेलते आया हूँ कि मैं अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करता हूँ, दाऊद इब्राहिम को ग्लैमराइज करता हूँ, छोटा राजन के बारे में। देखिए अंग्रेजी के अखबारों में बड़ी खूबसूरत हेडलाइंस आती थी और मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी कि उन्होंने जैसे 93 का क्लास हुआ था, एक अखबार की जो हेडिंग आई थी वो थी बॉम्ब बे, BOMB फर्स्ट ऑफिसर्स BAY बे, बॉम्ब बे। दिस वाज द फुल फ्लायर हेडलाइन। देख करके मन को इतना अच्छा लगा कि यार दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी इन द न्यूज़। हम लोग यूं नहीं कर रहे हैं मुंबई में 12 बम धमाके। अरे भाई कुछ तो कहीं तो बदलो। आप नहीं बदलेंगे तो यूथ से कनेक्ट कैसे करेंगे, आप उन लोगों से कनेक्ट कैसे करेंगे? तो आपकी रिपोर्टिंग पिछड़ा दी जाएगी। मैंने एक नई भाषा, एक नया शब्दकोश बॉम्ब
के अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग में करना शुरू किया और उसका बहुत विरोध हुआ। जितना विरोध हुआ उतना मैं जिद पे चढ़ गया। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा ही लिखूंगा, पर आपको छापना पड़ेगा। मेरे उस विरोध पर मेरे अखबार के संपादक, उप संपादक, समाचार संपादक, वो लोग सब नाराज होते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो जिद थी वो धीमी हुई, कमजोर हुई, लेकिन मैं बाजी रहा और अंततः जीता। बदलाव की बात करें तो 1998 में आपकी पहली मैन्युस्क्रिप्ट जो अब किताब छपने जा रही है उसका पहला ड्राफ्ट छपने के लिए एक प्रक्रिया में आया वाणी के साथ में, और उस समय ये छप नहीं पाया। आज लगभग 20 साल नहीं 18 साल, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट मैच्योर हो गई। हम मान रहे हैं कि 18 साल बाद तो शराब भी मैच्योर हो जाती है। तो हाउ डिड द जर्नी change? How do you see the readers changing? How do you see the publishers changing? मनोहर कहानी से पी विवेक अग्रवाल राइटर कहानी वाले, so how do you see the wave of change in Hindi writer? देखिए, जब मैंने 92 में ये क्राइम की दुनिया और ये सब देखी समझनी शुरू की थी, उसी दिन से मैंने ये किताब का कंटेंट उठाना शुरू कर दिया था। 98 आते आते ये पूरी की पूरी जो कहानी थी, ये पूरा का पूरा जो लवाजमा था, ये पूरा एक तैयार हो गया। मैंने वो तैयार करके और अदिति जी के पिताश्री जो है अरुण माहेश्वरी जी, उन्हें दिखाई। वो एक विजनरी व्यक्ति हैं, पुस्तक प्रकाशन की दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पता चलता है कि हाँ इस चीज में दम है, तो वो उस मटीरियल को पिक करने की ताकत रखते हैं, समझ रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं छापूंगा। अच्छी तरह याद है कि इनका एक नया घर तैयार हो रहा था, जहाँ पे नीचे गोडाउन था, ऊपर घर बन रहा था, तो उसमें कुछ चीजें होनी थी। मैं वहाँ पर मेरे एक पुराने मित्र हैं, उनके साथ में पहुंचा वीरेंद्र राणा जी के साथ। हम लोगों ने 1-2 घंटा वहाँ बिताया, घर की जो सब चीजें थी। उसके बाद में The publishers always live in small houses, they have big warehouses. वही स्थिति थी। तो वहां से हम लोग निकले, तो समस्या ये थी कि भाभी साहब साथ में थी, तो अब उन्हें घर छोड़ना है। तो फिर तय ये हुआ कि एक काम करते हैं कि भाभी जी हमारी कार में चले जाएंगे और मैं माहेश्वरी साहब के साथ में उनके दफ्तर जाता हूँ। वहाँ पहुंचे तो पहले से जेएनयू के प्रोफेसर साहब, जो कि बड़े साहित्यकार भी थे, विराजमान थे। तो बैठे, दुआ सलाम हुई, माहेश्वरी साहब से बातचीत शुरू हो गई उनकी। फिर माहेश्वरी साहब ने कहा कि ये बाहर से आए, इन्हें निपटा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। तो मेरी तमाम बातें जब उन्होंने प्रोफेसर साहब ने सुनी, तो वो बेचारे बड़े आतुर व्याकुल हो गए, बड़े परेशान होने लगे और अचानक बोलते हैं, अरुण अब तो मनोहर कहानियां छापोगे? माहेश्वरी साहब को कहा तो सुन नहीं, उनके सामने बैठा हुआ उनका फ्यूचर राइटर उसकी बेइज्जती हो रही है, ये देख करके वो बड़ा सतर्क है, परेशान है। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है मैं आप लोगों की 1000 प्रतियां छापता हूँ साहित्य की, उसमें से 350, 400, 500 वापस आ जाती है, नहीं बिकती और मैं नुकसान उठाता हूँ। ये जो किताबें हैं ये साल की 1 लाख बिकेंगी तो छोटी बात है, तो ये छाप करके मैं साहित्य छापूंगा। उनका चेहरा देखने लायक था, वो बहुत बुरी तरह आहत हुए माहेश्वरी साहब के इस जवाब से। लेकिन माहेश्वरी साहब ने उस दिन जो चीज लिखी थी वो आज पूरी तरह फलित हो रही है। लोग कहते हैं, जैसे अभी आपके सवाल में एक अंदर पीछे भी सवाल छुपा हुआ था कि क्या हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं। मनोहर कहानियां और सत्य कथाएं जब बंद हुए थे आज से 8-10 साल पहले, मनोहर कहानियां 18 लाख के सर्कुलेशन पे बंद हुई थी, सत्य कथाएं जो है 12.5 लाख के सर्कुलेशन पे बंद हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज के युग में जब इंटरनेट है, जब आपके पास में और साधन है तमाम, इस वक्त में भी आपको मनोहर कहानियां और सत्य कथाएं बेचने के लिए किसी पब्लिसिटी का मोहताज नहीं होना पड़ता। आज भी 8 से 12 लाख विक्रम है। इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी पत्रिकाओं को सर्वाइवल करने के लिए दुनिया भर के पैसे खेलने पड़ रहे हैं और वो 4 से 5 लाख तक के सर्कुलेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या ज्यादा बिकता है? कहानी बिकता है। देखिए, दुनिया में सिर्फ 4 विषय बिकते हैं,
उन 4 के अलावा 5वां विषय आप पेश करके बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सबसे पहले अगर इस देश में या पूरी दुनिया में कोई सा सब्जेक्ट लिखता है तो वो है सेक्स। दूसरे नंबर पे अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखता है तो वो है आफ्टर लाइफ, भूत प्रेत पिशाच, ये सब चीजें हैं। मृत्यु के बाद क्या क्या आत्मा होती है, ये सब चीजें। जो तीसरा विषय है वो है धर्म, रिलीजन। बाइबल जितना लिखता है या गीता जितनी लिखती है उतनी आप दूसरी किताब नहीं दे सकते। लेकिन सब में तो सबसे ज्यादा बिना किसी परिश्रम के बिक जाता है वो है क्राइम। और दुनिया में अगर कोई आदमी ये दावा करता है कि क्राइम डज नॉट पे, मैं कहता हूं कि हु सेज क्राइम डज नॉट पे। एक मिसाल तो मैं बैठा हूं, इतने सालों से घर चला रहा हूं, यही क्राइम मेरे फेस का। So to come back to the book after this long journey, आपके दोनों किताबों में मुंबई और मुंबई रिटर्न में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो आज तक दाऊद इब्राहिम के कभी देखे नहीं गए, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप ही के पास हैं। उन फोटोग्राफ्स को रिप्रोड्यूस करना और उसके बाद जो होगा उसकी तैयारी रखना, तो एज एन ऑथर हाउ डू यू सी योरसेल्फ विद दैट? मैं आपको फोटोग्राफ्स की एक झलक दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमने इसके पूरा चेहरे नहीं दिखाए हैं। इनमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 कवर पेज हैं मेरे, इनके मिनिएचर्स हैं कवर पेज के। इसमें जो ऊपर वाला फोटोग्राफ है, ये ऊपर वाला फोटोग्राफ दाऊद इब्राहिम का सबसे लेटेस्ट वो पिक्चर है जो कि कराची में क्लिफ्टन एरिया, जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहां पर मोइन पैलेस नाम का दाऊद इब्राहिम के घर के अंदर का फोटोग्राफ है। हिंदुस्तान के व्यक्तियों के विचार उस घर के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, ये हमारे हिंदुस्तानियों का कैमरा अंदर पहुंचा है। और ये पहला फोटोग्राफ उसके स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर हम अपनी किताब के ऊपर शाया कर रहे हैं। दूसरा, इसके नीचे वाला जो फोटोग्राफ है ये है अली गुरेश का। ये वो डॉन है जिसका सिर्फ नाम आज तक हमारी एजेंसीज ने सुना है। आज तक किसी को भी इस व्यक्ति का चेहरा देखने का मौका नहीं मिला है। अली गुरेश का ये फोटोग्राफ किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। इस तरह के और भी काफी सारे फोटोग्राफ्स हैं, जैसे अर्चना शर्मा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओपन एम्बिशियस लड़की रही है, जो कि कई क्रिमिनल्स के साथ में, अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ काम कर चुकी है। उसमें से एक डॉक्टर श्रीवास्तव है, विकी गोस्वामी है। विकी गोस्वामी नाम का जो ड्रग डीलर है, नार्कोटिक्स मैन्युफैक्चरर है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, अहमदाबाद का निवासी है, मूल रूप से इस वक्त केन्या में रहता है। उसने कालांतर में ममता कुलकर्णी से शादी की है और ममता उसका पूरा कारोबार जो है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जितना है वो केन्या में रह करके देख रही है। जब वो दुबई जेल में था तब इन लोगों की जो है निकाह की और या शादी की बात चली थी और उसने शादी की थी और पूरा बिजनेस उसका संभालना शुरू किया था। वो लेजिटिमेट बिजनेस संभालती है उसका, उसके इलीगल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस से उसका कोई वास्ता नहीं है ममता कुलकर्णी का। तो ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, संसार है, इन लोगों से रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स हैं ये हासिल करना, इनसे रिलेटेड वीडियोस हासिल करना, ये सब चीजें हमारे लिए बड़ी चुनौती की तरह सामने आती है। बीच में हमारे पास में एक ऐसा वीडियो आया था जिसके बारे में बड़ी कशमकश हो गई थी न्यूज चैनल में और मेरे बीच में फसाद हो गया था, झगड़ा हो गया था कि हम ये वीडियो कैसे दिखाएं। उस वीडियो में सुनील दत्त साहब, जो कि एक बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही सुधरे सुलझे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व रहे हैं भारतीय फिल्म उद्योग के, वो जितने कठोर पिता थे उतने ही सरल हृदय और विनम्र और बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। वो जितने प्रेमी पति थे उतने ही अच्छे इंसान के रूप में भी हम उन्हें याद करते हैं। वो दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ करके दुबई में मुशायरे का मजा लूट रहे हैं। ये वीडियो हमारे पास है, उसकी प्रति मेरे पास आ गई है। वो वीडियो आज तक हम लोग नहीं दिखा पाए क्योंकि चैनल्स का मानना यह है कि जो मर गया व्यक्ति उसके बारे में ये सब चीजें दिखा करके क्या है। मीडिया एथिक्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक इनविजिबल लाइन बनाते हैं।
तो उन एथिक्स को क्या आपने कभी बरदरी में खड़ा किया, या उन एथिक्स ने खुद कोर्ट में आप अपने आप को हमेशा पाते हैं? देखिए, क्राइम रिपोर्टिंग करने वाला आदमी को सदा से मीडिया या प्रेस एथिक्स के कटघरे में खड़ा ही रहता है 24/7। एक वक्त था 90 के दशक के पहले तक की बात करूँ या 90 के दशक में भी यहाँ तक की मिड-90s तक, अगर हम गलती से किसी रेप की खबर लिख देते थे तो हमारा संपादक हमारे सिर पर सवार होकर तांडव करता था। क्या बदतमीज है, ये कोई खबर है लिखने की? तुम इतने साइकी कैसे हो सकते हो? ये खबर नहीं है। बाप ने बेटी से रेप किया या किसी 3 साल या 5 साल की बच्ची से रेप हुआ, उसकी खबर सोचना भी हराम काम हमारे लिए। और आज पहले सफे पर ये खबर चटकाई लेकर के छापी जाती है। आज टीवी माध्यम में ये खबर सबसे ज्यादा शाया की जाती है, उसे पैक कर करके दिखाया जाता है। ये एथिक्स की बात नहीं है, ये समाज के विघटन का प्रारंभ नहीं है। ये हम लोगों की कलुषित हो चुकी मानसिकता का, ये हमारे अंदर छा गए अंधेरे को दिखाता है कि हम अपने समाज के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनसे आनंद लेने लगते हैं। ये क्राइम रिपोर्टिंग नहीं है। हाँ, आप उनके पीछे के तथ्य उभार करके सामने लाएं, दिखाएं और फिर उस पर ठोक के बोले कि ये क्राइम है, तो मैं मानता हूँ यह रिपोर्टिंग है। एक बार ऐसा हुआ था कि 4 लड़के अरेस्ट किए बॉम्बे पुलिस ने, जो कि दूसरों के क्रेडिट कार्ड्स क्लोन करके और वो पेशा करते थे, तो उससे सामान खरीदा करते थे और बाद में उन्हें बेच करके पैसे कमाते थे। उनमें से एक लड़का जो है, उसके बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मुझे किसी बंदे ने उनमें से 3 ने उसे इंटरव्यू किया, तो उसमें से एक ने बताया कि वो लड़का जो है वो अंडर 18 क्रिकेट का बहुत ही शानदार प्लेयर है। मेरे मन में उत्सुकता जागी कि ये लड़का अगर अच्छा क्रिकेट प्लेयर है तो क्राइम में क्यों आया है। मैंने जब उसको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि जब अंडर 18 की टीम का सिलेक्शन हो रहा था, उस समय में उस बच्चे ने रमाकांत आचरेकर साहब, जो कि उनके सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं, और उसी समय में सचिन और विनोद कांबली, इन दोनों की भी टेस्टिंग चल रही थी। उसी करीब पूरे महाराष्ट्र भर से तकरीबन 200 के आसपास क्रिकेटर बच्चे आए थे उसमें सिलेक्शन में। तो वहाँ पे नॉर्म ये तय था कि जो भी व्यक्ति 1 ओवर में एक बंदे को आउट कर देगा, उसे एज बॉलर हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जो लड़का 2 ओवर्स में टोटल 14 रन बना लेगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी 10 रन बना लेगा। ये लड़का आता है, विनोद कांबली की 2 बॉल्स के ऊपर 2 छक्के जड़ता है और सिलेक्शन हो जाता है। ये लड़का आता है, सचिन तेंदुलकर को पहली बॉल में आउट करता है और सिलेक्शन हो जाता है। क्रिकेटर था, लेकिन वो लड़का इंग्लैंड टीम के साथ नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास में 400 रुपए के जूते नहीं थे खरीदने के लिए। और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के तमाम बड़े बड़े खां लोग, उस्ताद लोग, अमीर लोगों ने उस बच्चे को 500 रुपए की भी मदद नहीं की ताकि वो जूते खरीद करके वो उस टीम में शामिल हो सके। बाद में क्या हुआ, वो लड़का क्राइम में आ गया। ये दाऊद इब्राहिम, ये छोटा राजन, ये सब लोग इस देश की वो शख्सियत हैं जिनके पास में बहुत आला दर्जे का दिमाग है। अगर इनका इस्तेमाल इस देश की डिफेंस में होता, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी में होता, पुलिस में होता, तो न जाने ये लोग क्या करते। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज करते हुए 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों का मालिक है, और दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां उसके कारोबार नहीं है। अमेरिका में उसके बहुत ही शानदार 3 कैसीनोज हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसके बीच फील्ड्स हैं, साउथ अफ्रीका में उसकी सोने के खदानों में पार्टनरशिप है, चाइना में वो कंटेनर बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान के अफगान फ्रंटियर पे वो 1200 ट्रक्स की एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला रहा है। वहां पे एक बहुत बड़ा बिजनेस इसका कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस।
एक बहुत बड़ा बैंक जब खड़ा किया ISI ने, तो उसमें सबसे बड़ा पैसा लगाने वाला व्यक्ति वही था, दाऊद इब्राहिम। कालांतर में वो बैंक बंद हो गया, और उस बैंक के बंद होने से दाऊद इब्राहिम को 850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल के नाम से ये जो बैंक बना BCCI, इसका सिर्फ एक मकसद था कि हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए जो पैसा दुनिया भर में पहुंचाना है, उनके एजेंट्स को पहुंचाना है, हिजबुल मुजाहिदीन, सिमी और जो तमाम टेररिस्ट थे उनके पास तक पहुंचाना है, उसके लिए एक ऑफिशियल गेटवे तैयार कर सके। तो ये सब चीजें कैसे हुई? उन लोगों की समझ की वजह से हुई। इनका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर पाए? समाज को स्वयं से पूछना होगा, इस देश के हर उस हुक्मरान को अपने आप से पूछना होगा, हम पॉलिसी मेकर्स को एक अपने अंदर झांक करके समझना होगा कि हमारे बच्चे क्राइम में और अंडरवर्ल्ड में क्यों जाते हैं। तो मुंबई और मुंबई रिटर्न्स में आपने इन दोनों पहलुओं को उनकी जिंदगी के उजागर किया है, या सिर्फ उनके क्राइम की साइड पे आपने फोकस किया? दोनों पहली बात तो यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि समाज में हम लोग जिस बात को नकार देते हैं या ये देखते हैं कि भाई ये जो क्राइम है ये ग्लैमराइज हो रहा है, ऐसा नहीं है। इन किताबों से अंडरवर्ल्ड की सच्चाइयां सामने आ रही हैं, बहुत तल्ख सच्चाइयां सामने आएंगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज की इसे क्राइम की अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री के रूप में देखिए, इसे लाइट रीडिंग के रूप में देखिए, और इसमें जो तथ्य आपको मिलेंगे उससे आपको उनके हर उस पहलू की जानकारी मिलेगी जो अब तक प्रकाश में नहीं आए हैं। मुंबई और मुंबई रिटर्न्स, ये दो पुस्तकें आपके हाथों में जल्द ही होंगी, और इस सीरीज की और भी कई किताबें वाणी प्रकाशन लेकर आएगा, और इसके साथ में ही कई अन्य इसी तरह की जो बुक्स हैं वो आप लोगों के बीच आकर रहेंगे। अभी तक जो क्राइम राइटिंग हुई है सर, उसमें जेडे हो या फिर जैदी साहब की किताब हो, उससे ये किताब कैसे अलग है? और सबसे ज्यादा जरूरी मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि ये आपके कंटेम्परेरीज थे, तो उन राइटर्स से आपका कैसे रिश्ता था? क्योंकि ये सब लोग मुंबई में ही जर्नलिज्म करते रहे हैं, इनमें से कई मेरे काउंटर पार्ट्स रहे हैं, मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में काम किया है, और दिन रात का एक दूसरे के साथ में रिश्ता रहा है। आमतौर से क्राइम रिपोर्टर एक ऐसी ब्रीड है, एक ऐसा समाज है कलमदबाजियों का, जो एक दूसरे के साथ कभी दोस्ती नहीं करता। अपनी खबर मिल गई एक्सक्लूसिव तो वो ले करके ऐसा, हम उससे अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज को बोलते हैं, सुमड़ी में निकल जाता है, यानी चुपचाप चोरी से पतली गली पकड़ लेता है, चीनी गली पकड़ लेता है, और जा करके अपने एडिटर को बताता है, बॉस आज तो मैं ये झंडे मार के आया हूँ, आज तो मैं लंगोटी घुमा दूंगा अखाड़े में। लेकिन हम लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जो एक दूसरे से खबरें शेयर करता था, यहाँ तक कि हमने हमारे इन्फॉर्मेंट्स, हमारे खबरी, हमारे मुखबिर, हमारे सोर्सेस तक शेयर किए हैं, और हमारे बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, बहुत ही कर्मठ भरे रिश्ते हुआ करते रहे हैं। मैं अपनी किताबों को उनकी किताबों से अलग सिर्फ इस हिसाब से मानूंगा क्योंकि उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं वो नॉवेल फॉर्म में लिखी हैं, और मैंने इन्हें रिपोर्टर के फॉर्म में लिखा है। लेकिन हर एक के लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत, एक यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अडॉप्ट की है, जिसमें मैं किसी न किसी सच्चे डायलॉग के साथ में खबर शुरू करता हूँ, माफ कीजिए चैप्टर शुरू करता हूँ, ताकि आप उसे पढ़ते पढ़ते आसानी से उस चैप्टर में उतर जाएं और पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लें। कहीं कहीं पर यह जरूर हुआ है कि चैप्टर अगर जैसे 17 चैप्टर हैं या 18 चैप्टर हैं, तो उनमें से किसी किसी में एक दो कंटेंट आगे पीछे हुआ भी है कि आपको वही चीज दूसरे चैप्टर में भी दिखाई दे जाएगी, लेकिन वो उसका रिलेवेंस है उस चैप्टर में, क्योंकि वो चैप्टर ही अपने आप में आया है। हमने अंडरवर्ल्ड की महिलाओं के बारे में एक चैप्टर रखा है। सबसे बड़ी एक चैप्टर जो हमारा है वो महत्वपूर्ण ये है कि माफिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं। तो मैंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की है कि भाई ये मुंबई माफिया हम कहते हैं, तो माफिया शब्द एग्जिस्टेंस में आया कैसे, उसका इतिहास मैंने 5-7 प्रश्नों में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। 40-50 पेज में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड 1942 से लेकर के छोटा राज्य के हिंदुस्तान आने तक क्या है, क्या रहा, उसके बाद में अंडरवर्ल्ड पहले कैसा था और आज क्या है, वो फर्क बताया है।
हमने ये बताया है कि स्ट्रक्चर कैसा है अंडरवर्ल्ड का, जैसे डिफेंस काम करता है, जैसे पुलिस फोर्स काम करती है, जैसे कारपोरेट हाउसेस काम करते हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान का अंडरवर्ल्ड, मुंबई का अंडरवर्ल्ड ही काम करता है। इसी वजह से उसे कंपनी कहते हैं, डी कंपनी, नाना कंपनी, एवी कंपनी। तो ये कंपनी बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया कैडर बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑपरेशंस में लीड करते हैं, काम करते हैं। टॉप पे बॉस होता है, उस बॉस के नीचे एक सेकंड बॉस होता है, उसके नीचे उनके लेफ्टिनेंट्स होते हैं जो कि हर काम में अपने अपने माहिर लोग होते हैं। उनके पास में अपने अपने शटर्स की पूरी की पूरी टीम होती है, उनके पास में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की टीम है, उनके पास में डेड बॉडी स्क्रीन करने वाले धोबियों की एक पूरी की पूरी टीम होती है। ऐसे उन लोगों के पास में पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। आप लोगों को जान करके मजा आएगा कि अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं उनके अलायंस नेम्स रखे जाते हैं। एक बंदे का नाम था पुराना मंदिर। आप बोलेंगे यार ये पुराना मंदिर क्या नाम हुआ होगा? चूंकि उस पट्टे ने एक पुराना मंदिर नाम की फिल्म में काम किया था, इसके लिए अंडरवर्ल्ड के लोग उसे पुराना मंदिर के नाम से पहचानते हैं। सलीम भट्टी, सलीम कुत्ता, सलीम कुर्ला, सलीम मच्छी, ये सारे इतने सारे सलीम है, 150 सलीम है अंडरवर्ल्ड में। लेकिन हर एक को अलग से कैसे पहचाने? या तो वो सलीम शेख होगा, या सलीम कुरैशी होगा, या सलीम अंसारी होगा, या सलीम खान होगा। ये 5-7 ही सरनेम के सलीम होते हैं। अब बात के नाम के साथ जोड़ करके तो सलीम को याद नहीं रखा जा सकता। तो जो लड़का कुर्ला में रहता था वो सलीम कुर्ला हो गया, जिसके जिस्म से सलीम, जिसके घर में मछलियों का धंधा था और उसके जिस्म से मच्छी की बदबू आती रहती थी, वो सलीम मच्छी हो गया। जो कुत्ते की तरह भौंक के बात करता रहता था, उसकी उस खूबी के कारण उसका नाम सलीम कुत्ता हो गया। अभी जावेद खाड़ा थे जिनका एनकाउंटर हुआ, उनके 2 दांत बाहर निकले हुए थे और वहां मुंबई में लोग जिसके दांत बाहर निकले रहते हैं उसे खाड़ा बोलते हैं, तो जावेद खाड़ा हो गए। हमारे यहाँ सब है, मेंटल भी है, लाइटिंग भी है, बत्ती भी है, पूरी भी है। मेरी किताब में इन लोगों के ये जो उर्फ नाम पढ़ने की दास्तान है उसको खोज खोज करके मैंने लिखा है। एक जनाब जिनको की चांदी कहते थे, वो चांदी जो है उसे मैंने खोजा। मुझे उसे खोजने में 3 महीने लग गए। और जब मैंने उससे पूछा तो बोलता है कि मेरे बाल सफेद हो रहे थे, एक मुझे वैद्य ने दवा दी थी, वो मैं लगाता था, रात में मेरे बाल चांदी की चमक की तरह से चमकते थे, इसलिए मुझे जो है चांदी हो गया। तो ये ग्लॉसरी तो हमारी किताब में है ही। तो जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग 2 minutes couple I come into the thing. Do we have a question answer session after this? Or it's a part? Okay, so now we open the house for discussion. Any queries, questions, comments from the audience is most welcome. In all the years that you have spent looking at the underground, what has surprised you the most? The most surprising thing in my life was the life of underbelly of Bombay and association of big politicians with them. How politicians use the underworld, that was the most surprising fact. And these 2 books, that particular chapter is not there because some research and some data, more data I'm retrieving from judiciary and some other sources, and definitely third part we will get that particular chapter. Very curious to know what would the other journalists. Come again please. किसी ने आपके नाम पे सफाई निकाली थी जी, और आपको जाके बोला था कि ये मैंने नहीं लिखा है, इसने लिखा है, तो उसने बोला था कि आपसे माफी मांगने और दूसरे को थोपने, तो व्हाट हैपेंड टू हिम? इज ही अलाइव? वो बहुत अच्छे हैं, वो इसी शहर में, आप ही के शहर में अब रह रहे हैं। मैंने छोटा शकील को ये बात समझाई कि इसमें उनकी गलती नहीं है। एक एक्स पुलिस कमिश्नर थे उस समय, अब एक्स हैं, वो जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बने तो उन्होंने 4 जर्नलिस्ट को बुला करके अपने पास में ये स्टोरी लिखी थी। एक फेक प्लगिंग स्टोरी थी कि दाऊद इब्राहिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और मेमन को जो है मार दिया है। And was this?
When was this? It was around 96-97. तो उस चीज से वो नाराज हुए, तो मैंने कहा कि अगर आपको मारना है तो वो लड़के को मैं दूंगा आपको, शर्त ये है कि सबसे पहले आप उस कमिश्नर को मारें। उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे अंडरवर्ल्ड से तो ये माफ कीजिए पुलिस से हम हमला हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये गरीब पत्रकार जिसके हाथ में कलम होती है एंड यू आर रेडी टू शूट द मैसेंजर बट यू कैन नॉट किल अ पर्सन हु इज प्लगिंग द स्टोरी, अ फेक स्टोरी। तब जाकर के उन्होंने ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई का इरादा बदल गया। सर जब 1993 के बाद धर्मपुरी को हिंदुओं प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी और इसकी शिवसेना का देखिए अरुण गवली जब से खून खराबे के उद्योग में है, दाऊद के साथ में रहते हुए भी वो हिंदू डॉन के रूप में उसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश हमेशा से हिंदूवादी दलों ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं। मणिया जो था जिसके बारे में फिल्म आई जिसमें बहुत ही गलतियां और खामियां थी, ऐतिहासिक तथ्यात्मक गलतियां, उसे वो बहुत ही कट्टर हिंदूवादी मानसिकता का व्यक्ति था और उसने बहुत इस तरह के काम किए। तो ये सारी चीजें हैं और उसका प्रोजेक्शन अगर हिंदूवादी डॉन के रूप में हुआ है तो वो निश्चित है, और उसके बाद में देशभक्त के रूप में अगर किसी डॉन को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है तो वो है सुधार। सर शिवानी, एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि जो गैंगस्टर्स बनते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी का हाथ होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ दाऊद इन पर्टिकुलर बात करें, उनके फादर मुंबई पुलिस में थे, इब्राहिम कासकर, एक ईमानदार कांस्टेबल माने जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि दाऊद इब्राहिम को बनाने में सोसाइटी जिम्मेदार थी, या वो माइंडसेट जिसे हम नहीं चेंज कर पाए उस समय तो छोटा दाऊद हुआ करता, या वो माइंडसेट? तो क्या आपको रीजन लगता है कि वो और उसके जो 3 भाई थे वो इस राह पे था ना, उन्होंने इसके फेवर में समझा, ना कि जो था उसके फादर चल रहे थे जिस पे उस पे? दाऊद इब्राहिम के पिताजी जो इब्राहिम कासकर साहब हैं वो मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में हवलदार हुआ करते थे, जो सब जानते हैं। वो कितने ईमानदार थे या नहीं थे इसके ऊपर अलग अलग राय है, और उनके बच्चों की संख्या 11 थी। छोटे से घर में रहते थे डोंगरी इलाके में टिंकर स्ट्रीट पे, और उनके लिए इन बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिन काम होता था, और उस समय अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज बड़े चरम पर थे। वहाँ का जो माहौल था पूरा का पूरा, उससे बाहर निकाल करके दाऊद इब्राहिम को साबिर को पढ़ाने की बेतहाशा कोशिश एक पिता ने की, लेकिन उस माहौल का ऐसा असर उन पर पड़ा कि वो लोग भी उसी एक्टिविटीज में चले गए, और एक वक्त ऐसा आया कि पिता के हाथों में भी ये कमान नहीं लग गई कि बच्चों को बाहर निकाल ले इस तरह से। दाऊद इब्राहिम जो है वो चूंकि एग्रेसिव बहुत था, और साबिर जो है वो बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा संतुलित ठहरे हुए स्वभाव का बंदा था, तो वो मार काट में बिलीव नहीं करता था, लेकिन दाऊद टिट फॉर टैट, आंख ली तो आंख लेगा वाली तौर तरीके का काम करने वाला व्यक्ति था। अंडरवर्ल्ड में उसी के कारण पूरी की पूरी खून खराबे की लहर शुरू हुई, उसके पहले तक कोई स्थिति नहीं थी। तो ये समाज का ही वो हिस्सा है जो कि उसे सुधार नहीं पाया, या उसे उस जगह से अगर हटा दिया जाता तो शायद वो उस तरह की स्थिति नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पर जो पुलिस लाइन्स होती हैं, तो पुलिस लाइन्स में इब्राहिम कासकर रहते तो इन बच्चों को वहाँ के जो पुलिस और कॉलोनीज के बच्चे हैं उनके जैसे पढ़ने लिखने, उनके जैसे सोचने और बाकी सब चीजें करने का की समझ पैदा होती, और वो लोग हो सकता है कि पुलिस में जाते या IAS IPS बनते या कुछ और। As I get the indication, we'll have to close the session here. Just before we leave the stage, I'd like to extend a very heartfelt thank you to Navita Gokhale, who has always stood up for Indian languages and various literatures written in Indian languages. And that's the reason that I think ours is the first session in Hindi at Crime Writers Festival. To Lady Kishma Desai for having us over, thank you so much. To Preeti, ma'am, I don't know if she's around this morning now. She is. So thank you so much, and Meeta ma'am for organizing this wonderful show in India, and we hope to see many more chapters of Crime Writers Festival
in the United States. Thank you so much, team. And the author is available for all your questions besides the stage. Thank you so much. Thank you to both the panelists, and that's what I wanted to inform you. After this, we break 15. So in case these interactions are too fascinating for you to let go of, you can always continue them with the author. And please do join us with tea after this. We reconvene at 12:20, and like I requested, let all the good people here be back on time, and so that we can begin the next session, which is India's Copiers, exactly at 12:20. Thank you so much. Do join us for tea. Should we go in and have a cup of tea while we're talking? I must take another